So in my previous class, I was talking about Gaussian map and Gaussian curvature. So Gaussian map was if you have a point on the surface and you have map G. Just a small recap. If you have a point in the surface, suppose some point is there in domain and you are mapping this point. This is a point P having some normal N, and the map is such that it is projecting this point P on a unit sphere, such that if this is a unit sphere, and it is projecting in such a way that this is a point P, this is point P star, and such that this OP star is equal to N, this normal. This is called your Gaussian map. And what is Gaussian curvature? Gaussian curvature, it was Gaussian curvature K, it was limit if this region is suppose omega and some region. So if this region is tending towards P, if this region is shrinking, then the area of omega star means if you have area domain this is omega star. So area of omega star divided by area of omega. This was your Gaussian curvature, and we just calculated. So the expression for this Gaussian curvature was coming B upon G. Okay. Some students are saying not connecting. I don't know why it's not connecting. So because of the network. So it's my network problem or it's their network problem? The network problem because of heavy rainfall. Heavy rain. their network problem. Heavy rain तो यहाँ भी हो रही है, आपके रामपुर में भी हो रही है. जिनका नहीं हो रहा वो लेक्चर देख सकते हैं, मेरा बाद में प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ आप लोग. So this we have done, and then we find that it has a relation because G is always positive. So this, if B greater than 0, then K greater than 0, because sign of K will be depending on B. है ना? G is always positive. So if B greater than 0, then K greater than 0, then we have different curves, different points, elliptic point, parabolic point, and hyperbolic points. For a plane, K is equal to 0. And then for the sphere, we find that K was coming 1 upon A square. यहाँ तक प्रॉब्लम हो गई थी. For a sphere of radius A, Gaussian curvature was 1 upon A square. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. Change of coordinates means if we are changing a coordinate from one coordinate. हेलो सर. जी. यस सर ये हुआ, ये रिपीट कर दीजिएगा. जी रिपीट कर दीजिएगा, हम ट्राई कर रहे थे, बहुत देर से कनेक्ट नहीं हुआ था. ये लास्ट क्लास का है, ये रिकैप. जी सर, ये लास्ट. जी ये मैंने रिकॉल किया है, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट. जी है, ठीक है, वहां आप देख सकते हैं. ओके सर. यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. these were just recap. So next new topic is change of coordinates. है ना? Means if you are having old coordinates u1, u2, and you are changing your coordinates to new coordinates, suppose u1 dash and u2 dash, then what will be the formula? Like we have done in I think last unit, change of curvilinear coordinates. वहां पर हमने देखा था what is the value of G, what is the change in area. Same thing here. What is the change in B
and k. So if you are changing the coordinates from u1 u2 to u1 dash u2 dash, then we already know that ri dash इसका फॉर्मूला में ड्राइव किया था, it was ri del ui over del ui dash. This formula we have derived when we were doing your change of curvilinear coordinates, है ना, वहां पर अपने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया था. चाहे तो आप वहां पर रिकॉल कर सकते हैं. आई डोंट नो लेक्चर कौन सा था वो, लेकिन टॉपिक था चेंज ऑफ curvilinear coordinates. So ri dash was ri del ui over del ui dash. Otherwise, you can find it by doing some small calculation. Now, if you have new normal, suppose n dash, so n dash is the new normal in the new system, principal normal. I am taking by dash. So this will be some epsilon n, epsilon n, where epsilon is signature of sign of del of u1 dash, del of u1 del of u1 u2 dash upon del of u1 u2. ये वन है, ध्यान रखना टेस्ट में, del of u1 u2 वन के ऊपर टेस्ट है. तो जो न्यू नॉर्मल होगा उसमें that will be some epsilon types of epsilon times of old normal, principal normal, where this epsilon comes due to the change of sign. This comes due to a change of sign when the transformation of coordinates reverse the orientation. अगर सेम रखेगा तो इट विल बी प्लस, और अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गई तो इट विल बी माइनस साइन, है ना. साइन ओनली फॉर द ओरिएंटेशन, मींस इफ यू आर मूविंग इन द सेम वे देन इट विल बी प्लस, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो माइनस साइन का फर्क पड़ेगा. So here we can find ni dash and ni dash, vector ni dash. ये वेक्टर से सारे आपके लिए, these are vectors. Vector ni dash will become epsilon ni del ui over del ui dash. तो ये फॉर्मूला आएगा ni dash का, जैसे ये आएगा like this. ri dash formula is this. So if I want to find ni dash, it will be epsilon times ni, ये फैक्टर आ जाएगा. So if I want to find bi dash j dash, therefore your bi dash j dash, bij, क्या है bij? Coefficients of second fundamental form. तो इसका फॉर्मूला क्या था? What is bij? Minus ni dot rj. क्यों भाई? बोलिए. So bi dash j dash is what? Minus ni dash dot rj dash. This is the formula. So minus ni dash is minus epsilon ni dot rj, है ना. इसकी वैल्यू हम डैश की इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट सीखेंगे. क्या होगा? del ui over del ui dash into del uj over del uj dash. ठीक है,
इन्हें अरेंज कर लिए साथ में, and it is what? It is, you know, this is your minus Bij. So minus minus plus, so it will become epsilon Bij del ui over del ui dash del uj over del uj dash. Okay. So taking determinant both sides, taking determinant. We get, I want to find B. So you have determinant of Bi dash J dash equal to determinant of epsilon Bij determinant of del ui over del ui dash and determinant of del uj over del uj dash. And this determinant is what? इसको हम क्या किससे represent करते हैं? Determinant of Bij. It is B. क्यों भाई? So this will be B dash is equal to, this will become B and this, because it is the same quantity, you are having matrix, जब इसका determinant लेंगे, it is what? Del u1 over del u1 dash del u2 over del u2 dash. जैकोबियन होता है, तो जब आप इसकी वैल्यू लेंगे, I can write both are representing the same quantity because ij running from 1 to 2. So it will become del of u1 u2 upon del of u1 dash u2 dash square. So it is your B dash. Okay. And also G dash will be what? G dash हमने calculate किया था. G dash was coming G times of del of u1 u2 upon del of u1 dash and u2 dash इसका स्क्वायर. ये G आया था आपका when we calculated your change of collinear coordinates, है ना, वहां पर G dash निकाला था. This is your B dash. So hence K dash, that means Gaussian curvature in the new coordinate system, it will be what? B dash upon G dash. और वो कितना आएगा? B upon G, this will cancel out, so you got B upon G, which is same as K. So it means K remains invariant under the coordinate transformation. You are getting the same K dash. So what I can say? So hence this implies that K remains invariant under the coordinate transformation. Under the coordinate transformation. ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आया आपका. अगर somebody asks how to you prove it, so this is the proof of this. You have to find your, because you know K is equal to B upon G, K dash is B dash upon G dash, so you have to find your new B dash and G dash in the new coordinate system, and उसकी वैल्यू निकाल के आप दिखाएंगे, it will be coming same K. So by using relation 1 and 2. Okay, so this was your Gauss curvature. One problem is there. Problem. For a surface of
रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू एफ यू कॉस वी, y इज इक्वल टू एफ यू साइन वी, एंड z is equal to hu. It is the general equation of surface of revolution. जब आप रिवॉल्व करेंगे किसी कर्व को along about any axis, about any line, जो surface बनेगा that is called surface of revolution. जैसे एक लाइन ले पैरेलल टू x एक्सिस, टेक अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस सपोज, है ना, उससे रिवॉल्व कर दें अराउंड x एक्सिस, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए, क्यों भाई? ताकि कहाँ है मोहम्मद तकी? हराग भाषा Sir, curvature. if you take a line parallel to x-axis and revolve around x-axis, क्या बनेगा फिगर? What will the surface generated? बताइए। सिलेंडर सिलेंडर सर, सिलेंडर। सिलेंडर बनेगा, सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है इतना? तो एक लाइन ले लो एक्स एक्सिस से पैरेलल, या किसी भी लाइन के पैरेलल अगर आप लाइन लेंगे और उसको रिवॉल्व करेंगे कीपिंग फिक्स बाय कीपिंग फिक्स्ड वन लाइन, तो एक सिलेंडर बनता है ना? तो वो दैट इज आल्सो अ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन. So for a surface of revolution, show that k is equal to, that means k सिंबल आपका गॉसियन कर्वेचर का है. Show that गॉसियन कर्वेचर k is equal to h dash upon f, f dash h double dash minus f double dash h dash upon f dash स्क्वायर प्लस h dash स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आपको शो करना है. डैश मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू, आप u करेंगे तो f डैश हो जाएगा, क्योंकि f जो है फंक्शन u का है यहाँ पे ऑल द टाइम, h भी फंक्शन u का है. So it is coming this. It means what? कि for the surface of revolution you have to find your what? B and G, है ना? और for B and G what we have to find? बताइए. For B and G what we have to find? B का G का फॉर्मूला क्या था? याद है नहीं? हमारे यहाँ तो सिंपल चीजें हैं. What was G? G 1 1 G 2 2 minus, it was the formula for G. And what was B? ठीक है, क्यों भाई? Yes, sir. ये फॉर्मूला होता है G और B का. तो यहाँ पर आपको K निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला B अपॉन G. K इज B अपॉन G, है ना, गॉसियन कर्वेचर. सो यू नीड दिस. और ये क्या है? व्हाट इज दिस G11 G22? ये क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? क्या कहलाते हैं ये? बताइए. आप लोग तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए लग रहा है. क्विज कैसे दोगे आजकल? लग रहा है 0 आने वाले हैं सबके. ये तो भी लेटेस्ट पढ़ाया हुआ है, वो तो फिर पीछे का है. और व्हाट इज G11?
coefficient of what? Coefficient of first fundamental form. यही तो है G11, G12 and G22. So you have to find all these things. So your R is given here. R is given Fu cos V, Fu sin V, and Hu. Now tell me what I have to find now. What I have to find here? बताइए. हैं? R1. है ना? R. You have to Yes, find sir. your R1, R11, R12, R2. ये निकालेंगे. ओके, तभी तो आपका G11 आएगा. So we have done already this thing. क्योंकि I want to find these coefficient of first fundamental form. तो coefficient of first fundamental form में क्या आएगा? DS2 is how much it was? G11 क्या होता था बताओ? Du1 स्क्वायर प्लस, बताइए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म किसी को याद नहीं है? LMN में जो लिखी थी LMN, एनीवन? ये अपन की प्रॉब्लम कर चुके हैं ऑलरेडी. फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फॉर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. This I have already calculated. So it was coming, क्या आती थी? चलो ये आप it will be 2G12 du1 du2 plus G22 du2 square. ठीक है. तो when you will calculate this G11 निकल आएगा आपके पास. इससे हम कैलकुलेट करेंगे. G11 का फॉर्मूला क्या था? Gij is how much? Ri dot Rj. So when you will calculate for this surface of revolution, it was coming f dash square plus h dash square du. यहाँ पर du1 u है तो ये du, here your u1 is u and u2 is v in this problem. So it will coming du plus f square dv2. It will be your first fundamental form. कैलकुलेट करेंगे आप, G12 0 आएगा यहाँ पर. Similarly, you will calculate your second fundamental form. सेकंड में ये हो जाएगा B11, यहाँ B2 B12 और B22. So it will be coming f dash h double dash माइनस, यहाँ पर अब ये कोएफिशिएंट्स आपके जो B11 आएंगे तो B11 के लिए क्या फॉर्मूला था? Bij, व्हाट इज Bij बताओ? टू फॉर्मूलास. एक तो अभी ये लिखा है मैंने, देखिए ये रहा एक फॉर्मूला, तो माइनस ni डॉट rj, माइनस ni डॉट rj है ना, एक तो फॉर्मूला ये था. और भी कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए थे इसके. किसी भी फॉर्मूला से आपको Bij निकालना होगा. तो इसका Bij आई थिंक प्रॉब्लम मैंने किया है किसी इसमें फॉर द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन. पीछे एक प्रॉब्लम में आई थिंक किया हुआ है, उससे आप देखेंगे तो Bij विल बी कमिंग हाउ मच. तो इट विल बी, है ना, ये भी फॉर्मूला होता है इसका और एक ये भी होता है Rij डॉट n पॉजिटिव साइड, वेयर n is you know what. So it will be coming f dash h double dash minus f double dash h dash upon under root f dash square plus h dash square
du स्क्वायर, इसका भी b12 0 आएगा आपका, प्लस f of h dash अपॉन अंडर रूट f dash स्क्वायर प्लस h dash स्क्वायर dv स्क्वायर, इक्वेशन 2। ये वैल्यू इसकी आएगी सेकंड की, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। So finally you got ds2। अब इससे अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करें, because I want b and g, so if you will compare your coefficient, this is your g11, this is your g22 and g12 is 0। So from 1, g11 is the coefficient of du square, f dash square plus h dash square, g12 is 0 and g22 is coefficient of dv square is f square, and g will be what now? G11 G22 minus G12 square, so G12 is 0, so you got f square times f dash square plus h dash square. Similarly from 2 how much you have? This is your b11 coefficient of du square, so b11 is f dash h double dash minus f double dash h dash over under root f dash square plus h dash square. b12 is 0 and b22 is coefficient of dv square, this one, fh dash upon under root f dash square plus h dash square. Okay, so finally b will be how much? B will be v11 b22 minus v12 square, so it will become, just multiply this, so it will be how much? F of h dash times f dash h double dash minus f double dash h dash over square root will be removed here. So finally k is equal to b upon g. तो इसे आप पुट करेंगे, you will be getting the answer the same which is they are asking to prove it. Okay, here is the formula for k for surface of revolution. Next topic we have formulas of Gauss and Van Garten. Formulas of Gauss and Van Garten. Two important formulas, like if you remember, we have finite formula, finite equation for the curves. Finite equation में क्या होता था? C-net finite formulas होते हैं. In finite equations, we know the finite equations are the relation, the तो आपने पढ़ा होगा अभी, रिवीजन अगर किया होगा क्विज के लिए, इसमें भी है finite equation. This express the vectors डैश निकाले थे हमने सबके, है ना, t डॉट n डॉट एंड b डॉट, इन सबके जो डेरिवेटिव निकाले थे, तो एक रिलेशन निकलती थी, दिस वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t n and b, finite equation में निकाले थे. Now in the same way we will be find the expression of for the derivatives of, now we will find the derivatives of r1, r2 and vector n as a linear combination of these vectors, as a linear combination of r1, r2 and rn, so these vectors.
जैसे आपके टी डॉट एन डॉट बी डॉट थे यहाँ पर फॉर द सरफेस. For the surface, you have R1, R2, and N. Three important vectors you have. So, what is the relation in the derivatives of these three? This thing we will find here, and these formulas will be called Gauss formula and Van-Galton formula. The Van-Galton formula for the surface. So, throughout, I will be considering that R is a surface of class C2. R is a surface C2 surface of class C2, at least C2 of class at least C2. तभी मैं इसकी डेरिवेटिव की बात कर सकता हूँ R के टू टाइप्स आर आई जे है ना, बिकॉज आई वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ R1. तो R1 का डेरिवेटिव क्या होगा? यू कैन फाइंड R1 डेल R1 ओवर डेल U1 और डेल R1 ओवर डेल U2. तो हम क्या लिखेंगे? दैट आई कैन रिप्रेजेंट बाई R ऑफ आई जे, है ना. So but what is Rij? Suppose you have some surface here in E3 or R3. So you know this is some vector and you have some like this. Two curves are there. So it is some at a point P. Suppose this is your R1 vector and this is your suppose R2 vector. है ना? These are tangent to the surface. And where is your vector N? N is normal to the surface always. So what about derivative of R1, derivative of R2, जिसको अगर मैं denote कर दूं Rij से. What about this? So this Rij, है ना? It need not be tangent to the surface, लेकिन ये इसी surface में कहीं lie करेगा. किस surface में? A surface which is generated by R1, R2 and N, है ना? You have three vectors R1, R2 and N. अगर मैं three vectors ले लूं, so any vector Rij which is derivative of R1 or R2, it will be lying in the surface generated by these three vectors. So it means this Rij can be written as a linear combination of these three vectors. Can I write this? बताइए. This Rij can be expressed as a linear combination of R1, R2 and vector n, है ना. क्योंकि इन तीनों से जो सरफेस जनरेट होगा इट विल बी लाइंग समवेयर देयर, बिकॉज R3 में सारे ही आपके दे आर लाइंग इन R3. तो Rij को आई कैन राइट, so that means Rij can be written as a linear combination of. तो इसके लिए आई एम यूजिंग दिस नोटेशन Ij1 R1 प्लस Ij2 R2 प्लस बीटा Ijn. ठीक है, ये हमने नोटेशंस दिए हैं बिकॉज आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस नोटेशंस. So these are the coefficients. जो coefficient होते हैं R1 का coefficient, R2 का and N का. So this Rij can be written as a linear combination of these R1, R2 and N. Or in general you can say this Rij can be written as Ijk Rk plus beta Ijn. ये लिख सकता हूँ. So it is number one. It means what? Any vector R. तो यहाँ पर Ijk क्या है देखो. All you know all Ijk they are running from 1 to. It is the same. K is 1. So Ij1 Rk plus Ij2 R plus this. इस क्वांटिटी को हम
क्रिस्टोफर सिंबल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रिस्टोफर सिंबल. क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड. दिस इज कॉल्ड क्रिस्टोफर symbol of second kind of the second kind. Okay, so I will talk about this later. First we will find what is this beta ij. इसे beta ij को find करेंगे. So time is very short, so I will continue it in the next lecture.